नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस यूट्यूब चैनल में वेयर हम लोग प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला को अध्ययन कर रहे हैं। लगातार प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला के माध्यम से आपका ज्ञानवर्धन किया जा रहा है। आइए सीखते हैं, सिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। इससे पहले 10 प्रश्न हो चुके हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ICJ। देखिए, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एक गैर सरकारी ह्यूमन राइट्स के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया एक कमीशन है। इट इंक्लूड्स सीनियर जजेस, अटॉर्नीज एंड academics who work to develop national international human rights standards. The composition of the commission aims to reflect the geographical diversity of the world and its many legal systems, which are the correct. सभी के सभी नॉर्मल स्टेटमेंट्स है, तो इस तरह के प्रश्नों के आप डी आंसर दीजिए। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ICJ इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज स्टैंडिंग अप टू 60 इमिनेंट ज्यूरिस्ट, जिसमें 60 प्रमुख ज्यूरिस्ट को शामिल किया गया, जिसमें सीनियर जज हैं, अटॉर्नीज हैं, एकेडमिशियन हैं, जिनका नेशनल लेवल में काम किया, इंटरनेशनल में ह्यूमन राइट्स में स्टैंडर्ड थ्रू अ लॉ। कमिश्नर्स आर नन फॉर देयर एक्सपीरियंस, नॉलेज, फंडामेंटल कमिटमेंट्स to human rights. The composition of the commission aims to reflect the geographical diversity of the world and its many legal systems. Next question. India has signed Economic Cooperation and Trade Agreement ECTA. इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ अभी अभी सिग्नेचर किया गया। किसके साथ? चलिए, ये इसका ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी किया गया है। इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA was signed by the India with the previous Australian administration under the Prime Minister Scott Morrison. Next question. Consider the following statement regarding United States currency monitoring list. It is a report on macroeconomic and foreign exchange policy of major trading partner of United States. The report review the currency practices and policy of US trading partners. India has never been on the list in the last 5 years. बिल्कुल absolutely incorrect. एक और दो सही है। US Department of Treasury recently delivered its semi-annual report to the Congress on macroeconomic and foreign exchange policy major trading partners of US. The reports review the policy of the US trading partners during the last 4 quarters ending in June 2022. India and 4 other countries were removed from the monitoring list as they now only met one of the 3 criteria for the 2 consecutive reports. India has been on the list for about 2 years. इंडिया को, भारत को लगातार 2 वर्षों तक इसमें रखा गया है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू बीइंग बिफोर वर्ल्ड वार 1। ऐसा होता है क्या? इतना इजी नहीं पूछेगा, आपको लगता है ना? After the collapse of USSR in 1991, several Eastern European nations joined NATO. NATO works on a collective defense principle and is one for all and all for one. Nature of treaty. Which of the above statement is correct? जी हाँ, आपको पता होगा वर्ल्ड वार 1 के बाद नहीं, वर्ल्ड वार 2 के बाद उसका गठन किया गया था, इसलिए सी इज द राइट आंसर। 1 and 3 हाउ इट पॉसिबल? 2 and 3
North Atlantic Treaty Organization come into being after the World War II as a counter to the Soviet Union's possible expansion attempts in Europe. Then the US President Harry S. Truman signed the 12-member treaty April 1949. After the collapse of the USSR in 1991, several Eastern European nations, previously members of the Soviet Union, joined NATO. NATO works on a collective defense principle and routinely undertakes exercise to strengthen their territorial, naval, air force. NATO members also arm themselves to face evolving methods of attack like cybercrime and have participated in military operation in Herze- Bosnia Herzegovina, Kosovo, Afghanistan, Iraq, Libya, Syria, among others. Article 4 of the NATO Treaty mandates that the member nations consult each other when faced with threat. The parties will consult together whenever, in an opinion of any of them, the territorial integrity, political independence, or security of any of the parties is threatened. It reads, meanwhile, Article 5 spell out that one for all for one, nature of the treaty. One for all and all for one. Next question. Carbon border adjustment mechanism is a plan to tax carbon intensive products such as iron, steel, cement, fertilizer, aluminum, electricity generation is proposed by. ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है किसके द्वारा लाया जा रहा है? इससे यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया है. Carbon border adjustment mechanism is a plan from European Union to tax कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट जैसे कि आयरन है, स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है. 2026 से इन सब पर कार्बन टैक्स लगेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं. इनके निर्माण में कार्बन की खपत बहुत ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है. तो यूरोपियन यूनियन कैम अप विद द कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन 2021 में आ चुका है और इसको इन्फोर्स कर दिया जाएगा 2026 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन. नो मनी नो टेरर conference is an initiative of course UNSC या FATF या none of the above, किसी का नहीं है. India hosted the third No Money No Terror conference. India has proposed a permanent secretariat for No Money No Terror, a ministerial body to sustain the continued global focus on countering the financing of terrorism. No Money No Terror started in 2018. This is an initiative of French government which had in 1989 laid the foundation of Financial Action Task Force, the international body at the forefront of combating money laundering, terror financing. Next question from Polity. Article 44 of the Indian Constitution says the state shall endeavor, state shall endeavor to secure a uniform civil code for the citizens throughout the territory of India. UCC, that means Uniform Civil Code, provide for one law for the entire country, applicable to the all religious community in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption. जो एडॉप्शन है, चाहे गोद लेना हो, चाहे वंशानुगत हो, चाहे डाइवोर्स हो, चाहे मैरिज को लेकर हो, पूरे भारत में सभी धर्मों के साथ एक ही कानून लागू होगा. This principle laid down in the Part 4 of the Indian Constitution is a fundamental in the governance of the country and shall be enforceable by any court of India. No. 3 नंबर का गलत.
एक और दो, व्हाट वुड यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन इन इंडिया? क्या मतलब है यार? देखिए, यूसीसी वुड प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर इंटायर कंट्री। एक कानून पूरा देश पर लागू होगा। एप्लीकेबल खास करके किससे जुड़ा होगा ये सब मामला? ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स, जैसे कि शादी हो, तलाक हो, वंशानुगत नियम हो, गोद लेना हो, संपत्ति का अधिकार हो। आर्टिकल 44 कहता है, क्या कहता है? राज्य का यह परम कर्तव्य होगा कि वह पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करेगा। आर्टिकल 44, this is the one of the DPSP, describe the part 4 of the constitution. According to the article 37, the provisions contained in the DPSP shall not be enforceable by any court, but the principle therein laid down nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply this principle in making law. तो राज्य का यह परम कर्तव्य है कि जब भी वो अपने कानून बनाए, जब भी अपनी नीतियां बनाए, इसको लागू कराने के लिए उसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन covers a wide range of principles, including securing of equal justice and free legal to lead citizens, organization of agriculture and animal husbandry, protection and improvement of environment, promotion of international peace and security. Yes, all are correct. आर्टिकल 36 से 51 तक में, 36 से 51 तक में भाग 4 में कवर किया गया वाइड रेंज ऑफ प्रिंसिपल, ढेर सारे सिद्धांतों की बात की गई है, जिसमें यूसीसी भी शामिल है। सिक्योरिंग इक्वल जस्टिस, समान न्याय और फ्री लीगल एड टू द सिटीजन, आर्टिकल 39A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 43A, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 48, protection of and improvement of the environment and safeguarding the forest and wildlife, 48A, promotion of international peace and treaty, 51. Consider the following statement: fundamental rights are legally enforceable in the court of law of India. Fundamental rights are legally enforceable in a court of law in India. In the Minerva Mills judgment 1980, the Supreme Court held that Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between Part 4 and Part 5. But according to the Constitution, if a law is made to implement any of the DPSP, it cannot be challenged on the ground of being violative of the fundamental right under 14 and Article 19. कौन सा करेक्ट है? केवल एक करेक्ट है, केवल तीन करेक्ट है, केवल दो करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, एक और तीन करेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स लाइज एट द हार्ट of the Constitution and are justiciable, that is, they are legally enforceable in court of law. In its landmark Minerva Mills judgment in 1980, the Supreme Court held Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the Part 3rd, that is fundamental rights, and Part 4, directive principles, to give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the Constitution. Article 31C says that if the law is made to implement any of the DPSP, it cannot be challenged on the basis or on the ground of being violative of the fundamental rights under Article 14 and Article 19. Consider the following statements. In India, Constitution gives the government the right to levy taxes on individuals and organism. कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, अधिकार दिया है क्या भारत सरकार को या सरकार को कि कोई भी टैक्स लगाए इंडिविजुअल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे।
ये इसके लिए स्पेशल टैक्स लॉ है, ये संविधान ही खुद बोलता है। संविधान में चर्चा है ना, चर्चा तो है, पावर भी देता है क्या। एज पर द सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड स्टेट्स हैव concurrent पावर ऑन टैक्सेस। In India, any tax being charged has to be backed by the law passed by the state legislature or the parliament. तीन तो बिल्कुल सही है, एक भी सही है। Let's see, B 1 and 3 is right. In India, the constitution gives the government the right to levy taxes on individuals and organizations, but makes it clear that no one has the right to levy or charge taxes except by the authority of law. कानून बनाने के बिना ऐसा नहीं हो सकता, कानून बनाना पड़ेगा इसके लिए। एनी टैक्स being charged has to be backed by the law passed by the legislature or the parliament. Taxes in India come under a three-tier system based on central, state, and local governments. And the seventh schedule of the constitution puts separate heads of the taxation under the union and state list. There is no a separate head on the concurrent list. इसके लिए कोई concurrent list की बात नहीं की गई है। Meaning, union and states have no concurrent power of taxation. Consider the following statements. Indian Constitution mandates local governments to prepare and implement plan for what economic development and social justice in rural India. Indian Constitution mandates local governments to prepare and implement plans for economic development and social justice in rural India. The main objective of Mission Antodaya is to ensure the optimum use of resources through the convergence of various schemes that address multiple deprivation of poverty. Annual survey in Gram Panchayat across the country is an important aspect of Mission Antodaya framework. जनरल सी बात है, सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है, एक भी सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स लोकल गवर्नमेंट to prepare and implement plans for economic development and social justice. आर्टिकल 243G एंड 243W के तहत संविधान ही खुद ऐसा कहता है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, करना होगा इकोनॉमिक विकास और सोशल जस्टिस। Adopted in Union Budget 1718, Mission Antodaya is a convergence and accountability framework aiming to bring optimum use and management of resources allocated by the various ministries, department of the Government of India under the various programs for the development of rural areas. It is envisaged as the state-led initiative with Gram Panchayat as focal points of the convergence effort. The main objective of Mission Antodaya is to ensure optimum use of resources through the convergence of various schemes that addresses multiple deprivation of the poverty, making Gram Panchayat the hub of the development plan. Annual survey in Gram Panchayat across the country is an important aspect of Mission Antodaya framework. Which of the following institutions were introduced to promote social justice and progress in rural India? Which of the following institutions were introduced to promote social justice and progress in rural India? Gram Sabha, State Finance Commission, District Planning Commission, a committee, सबके सब। Several complementary institutions and measures such as Gram Sabha to facilitate people's participation, District Planning Committee to prepare bottom-up and special development plans, State Finance Commission to ensure vertical and horizontal equity, one third reservation of women in the most state, now 50%,
population based representation to the scheduled caste, scheduled tribes, community, and so on, were the introduced to promote this goal. Even so, India's decentralization reform, with no parallel in federal history, have failed to take the decentralization process forward in delivering social justice and progress in rural India. Consider the following statement regarding the Constitution 103rd Amendment Act 2019. 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दो जो किया गया उसके बारे में पूछा जा रहा है 103rd अमेंडमेंट प्रोवाइड अप टू 10% reservation to economically weaker section among non-OBC, non-ST, SC section of the population. The amendment provide reservation in higher educational institution and in initial recruitment in central government jobs. The amendment excludes reservation in state government jobs. How it goes? B 1 and 2. 103 Amendment inserted Article 15 subclause 6, 16 subclause 6 in the Constitution to provide the 10% reservation to economically weaker section EWS among the non-OBC, non-ST/SC section of the population. In other words, the amendment had changed the Constitution and introduced the quota for the poor among the so-called forward caste or general category. Where is the quota for the general category or poor available? The quota is available in admission to the higher educational institution and initial recruitment in central government jobs. The amendment also empowered the state government to provide reservation on the basis of the economic backwardness. The first amendment to the Constitution of India contained which of the following provisions? Exempted land reform scrutiny, exempted, provided protection from backward classes in the Constitution, expanded the scope of restriction on the right to free speech, 3 नंबर का Constitution First Amendment Bill sought to make several consequential changes. पहला तो from exempting land reforms from scrutiny to provide protection for the backward classes in the Constitution. Notably, it also expanded to the scope of the restriction on the right to free speech भी इसमें free speech में भी conclude कर लिया गया था यार. Consider the following statements. According to the Election Commission, condition of the service of election commissioner and transaction of the Business Act 1991, the term of the chief election commissioner and other election commissioner is 6 years or till the age of 65 years, whichever is earlier. Since 2004, election commissioners are selected in such a way that they complete their full terms. Article 324 states that the chief election commissioner is removed through the impeachment. इम्पीचमेंट कहाँ से लगेगा यार इम्पीचमेंट में थोड़ा लगता है अब यहाँ पर तो कंफ्यूजन कर देगा 1 और 3 सही दे दिया है इम्पीचमेंट नहीं होता लेकिन ये प्रोसेस ठीक है मान लेते हैं हम इसमें करेक्ट देखिए सक्सेसिव गवर्नमेंट आई गई 2004 में क्या हुआ पिक्ड पीपुल whom it knew would never ever get close to the full of the 6 year prescribed under the election commissioner या कमीशन एक्ट 1991 सेक्शन 4 क्या कहता है इसका एक्ट का द टर्म ऑफ सीईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर इज 6 year और टिल द एज ऑफ 65 year विच एवर इज अर्लियर प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 324 लाइक रिमूवल थ्रू द इम्पीचमेंट अवेलेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीईसी ये इम्पीचमेंट शब्द नहीं है रिमूवल शब्द है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए लगती है वही उसी के बराबर है लेकिन ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ही है
Partial protection against double jeopardy is a fundamental right. Partial protection against double jeopardy is a fundamental right guaranteed under the Article 20, Suppose 2 of the Constitution in India, which states that no person shall be prosecuted, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. Let's talk about history, art, and culture. Consider the following statement regarding Chhat Puja. This festival is mainly celebrated in southern India. Uh, uh, It is dedicated to the worship Lord Sun. It is celebrated few days after Diwali festival. दो और तीन सही है भाई. Chhat Puja is one of the most major festival of India. This festival is celebrated in the most part of Bihar, UP, and also some part of Nepal. It is celebrated 6 days after Diwali. 6 दिन बाद दिवाली के 6 दिन बाद सातवां दिन होता है. On the sixth day of the lunar month of Kartik, अक्टूबर नवंबर में पड़ता है लूनार मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक महीना में. In the Hindu calendar, this day is observed by offering prayer to Lord Sun and taking dips into the holy water of Ganga. Answer the following statement regarding the classical language. Currently, six languages enjoy classical language status in India, of course. For declaring a classical language, the language should have literary tradition, must be original and not be borrowed from another speech community. Sanskrit was the first language to be declared as the classical language. Absolutely wrong. 1 and 2 is right. तेलुगु को शामिल किया गया था शायद या तमिल को. करंटली 6 भाषा है जिसको क्लासिकल स्टेटस का दर्जा दिया गया है. पहला है तमिल जिसको 2004 में डिक्लेयर किया गया था. संस्कृत को उसके 5 में. कर्नाटक कन्नड़ से 2008, तेलुगु 8, मलयालम और उड़िया. गाइडलाइंस फॉर डिक्लेयरिंग अ लैंग्वेज एज अ क्लासिकल आर, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है. एक तो हाई एंटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 से 2000 साल पुराना इनका इतिहास होना चाहिए. ए बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर या टेक्स्ट विच इज कंसिडर्ड इज अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय द जनरेशन ऑफ द स्पीकर्स. इसका कोई एक सांस्कृतिक, इसका कोई एक विरासत होना चाहिए. जनरेशन दर जनरेशन इसको कोई बोल रहा हो. लिटररी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल, जो ट्रेडिशन है वो ओरिजिनल होना चाहिए. किसी का चुराया हुआ, किसी का बोरो किया हुआ नहीं होना चाहिए. क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, देयर में बी a discontinuity between the classical language and its later form of its offshoots. Consider the following statement regarding Ulgulan movement. Ulgulan movement was started by Birsa Munda, who encouraged the tribals to refuse following the colonial rules and paying rent. It involved the use of weapons and guerrilla warfare to drive out foreigners. पहला ही सही है और दूसरा भी सही है. छापा मार का हम लोग प्रक्रिया तो वो हालांकि दिखाया नहीं गया था. उलगुलान मूवमेंट ऑफ 1899, 1900 नहीं बल्कि 1899 में, also involved the use of weapons and guerrilla warfare to drive out the foreigners. Munda encouraged the tribals to refuse following colonial rule and paying taxes, rents. Birsa Munda encouraged changes in social sphere to challenging religious practices, to fight against superstition, became known as Bhagwan, God, Dharti Aba, father of the earth, by his followers. But the Birsa were soon able to halt the movement. On 3 March 1900, Birsa was arrested by the British police while he was sleeping with his tribal guerrilla army at the Jamkopai forest in Chakradharpur.
Consider the following statement regarding Patan Patola. Pa- Patan Patola या Patan Patola या Pathan Patola. Patan Patola is an ancient art of double ikat woven in pure silk. Patan Patola, its original origin in its intricate technique of dyeing known as bandhani. It is mainly made in Rajasthan. I think it's everything one and two is right. पातन पटोला एक एंशियन आर्ट है डबल इकत या पटोला ओवन इन द प्योर सिल्क जो कि 11वीं सदी में इस्तेमाल किया जाता था पटोला फैब्रिक्स वियर एन इक्वल इंटेंसिटी ऑफ कलर्स एंड डिजाइन ऑन बोथ साइड्स दिस peculiar quality has its origin and intricate and difficult technique of dyeing not dyeing known as bandhani or on the wrapped separately before weaving. One of the major practitioner of the de-windling art form is Salvi family from North Gujarat. The Salvis. The Salvis last surviving family into Patola weaving is the Salvi family in Patan. Patola is woven on primitive hand-operated harness looms made out of wood and bamboo strips. The loom lies on slant. The another commonly worn patola is Rajkot patola, woven on a flat loom. यही है पाटन पटोला गुजरात में बनता है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल इज एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड 1 से 10 दिसंबर के बीच में नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट नागालैंड द एनुअल फेस्टिवल एट किसामा नियर स्टेट कैपिटल कोहिमा showcase the culture and tradition of the all ethnic communities. The Battle of Rayangla was fought during Rayangla. It's a Sino-Indian War 1962, November 18, 2022, the sixth 60th anniversary of Battle of Rayangla, one of the few bright spots in the War of 1962 with China. On the day of 13, Kumao's company made their heroic last stand against the Chinese army in the high Himalayas of Ladakh, warding off a very significant threat in the process, writing a glorious chapter in India's military history. Next question from agriculture. Consider the following statement regarding the buffer stock management in India. Buffer stock refers to a reserve of a commodity that is use of used to offset price fluctuation या फिर unseen emergency. At present, buffer stock is maintained only for rice and wheat. Ministry of Agriculture fixes the minimum buffer norms every year, not Ministry of Agriculture. A is the right only one. Buffer stocks refers to a reserve of a commodity that is used to offset the price fluctuation या फिर unforeseen emergency आ जाए. It is generally maintained for the essential commodity and necessities like food grains. This concept of buffer stock was first introduced during the fourth five-year plan 1969 to 1974. The buffer stock is maintained for pulses, wheat, rice,
Cabinet Committee on Economic Affairs fixes buffer norms every year. Consider the following statement. Minimum support price may be both lower or higher than the prevailing marketing price of the particular crops. Hard possible. अगर लोअर मार्केट प्राइस से देंगे तो फिर फायदा क्या है? तो वो मार्केट में नहीं बेच देंगे जाके. All food grain procurement operation in India are undertaken by the FCI. No, दोनों इनकरेक्ट है. यहाँ बी इनकरेक्ट दिया हुआ है. MSP can be anything. लो, MSP कुछ भी हो सकता है. That the government considered that the farmers should fairly get. This is to the help. This is a mechanism to help them get fair remuneration for the produce and to motivate or demotivate them to produce a particular crop. किसी क्रॉप को उगाना चाहिए नहीं चाहिए उसके लिए प्रोत्साहन हतोत्साहन करने का एक बेहतरीन तरीका है और साथ साथ एक तरह से भरोसा जगाना है सरकार को कि इस बात का श्योर रहे कि आप जो उत्पादन कर रहे हैं आपका उत्पादन अगर ना बिके तो हम खरीदेंगे. हेंस इट कैन बी इधर लोअर भी हो सकता है और हायर भी हो सकता है देन द मार्केट प्राइस. फॉर एग्जाम्पल इफ द गवर्नमेंट विशेज टू डिस्करेज राइस फार्मिंग. अगर सरकार चाहती है कि राइस फार्मिंग ठीक है ना हो या कम से कम हो या डिस्करेज करना चाहिए ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पानी का सुविधा ही नहीं है, खाली भूमि का जल दोहन हो रहा है, जैसे पंजाब में हरियाणा में वाटर जिस तरह से रिसोर्सेस हो रहा है वहाँ पर कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए वाटर का. तो डिस्करेज करने के लिए इसका प्राइस को लोअर कर दिया जाएगा मार्केट प्राइस से. जाइए अपना बाजार में बेचिए, उठाइए पैसा. तो स्वाभाविक है एमएसपी अगर कम रहेगा तो सरकार कहीं ना कहीं किसानों को एक तरह से राह तो दिखाएगी एमएसपी कम करके. प्रोक्योरमेंट सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन 1997 में स्टार्ट किया था प्रोक्योरमेंट सिस्टम को. जो सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया गया था पहली बार प्रोक्योरमेंट को, where states play a vital role in the supply chain. Not all procurement are done by FCI. State cooperative agency and other state level distribution agency also play a crucial role. केवल एफसीआई ही मतलब ये काम नहीं करती है प्रोक्योरमेंट का, बल्कि और भी कोऑपरेटिव एजेंसी है, स्टेट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियां हैं इस भूमिका को निभाने में मदद करती है. इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग are use crop residue management. Happy seeder, smart seeder, super seeder. जैसे happy seeder, super seeder, सबका सब seeder. Many farmers this year said that they are not burning the paddy stubble completely and are instead restoring to a particular burning or burning only loose straw. What is the partial stubble burning? आफ्टर हार्वेस्टिंग फसल काटने के बाद फार्मर्स ऑप्टिंग द पार्शियल बर्निंग लेट द लूज स्ट्रो ड्राई फॉर a couple of days and then they set these dumps on a fire to prepare the field for next crops. In such cases, standing stubble, which is mostly green, does not get burned fully, but it gets scorched close to those places in the field where loose straw is burnt. Even after having three main machines such as Happy Seeder, Smart Seeder, Super Seeder, many farmers are restoring to the partial burning. Official said the three machines ensure that there is no need to for partial burning even after harvesting, as the stubble clearing is not required. So, wheat. Consider the following statement regarding in 2021-22, vegetable oil is accounted for more than 50% of India's total agriculture imports in terms of value. In the last one decade, India had surplus in agriculture trade in the terms of value. In 2021-22, बासमती राइस constituted
India's top agriculture export them in the term of value. Which are the correct? चलिए, इसके बाद तो सही करते हैं एक और दो। ये देख लीजिए, एग्रीकल्चर टोटल ट्रेड। India's farm product export over the last past decade, the surplus in agriculture trade matters because this is the one sector apart from the software service where India has some comparative advantage. Almost 60% of India's total agri imports is accounted for a single commodity. वेजिटेबल ऑयल्स की बात करो तो देख चुके हैं वेजिटेबल ऑयल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम से, अमीस। एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम is an inter-agency platform to enhance food market transparency and encourage policy coordination in times of crisis was set up by। ये अमीस किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा सेटअप किया गया है? G20 मेंबर्स के द्वारा। एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम AMIS is an inter-agency platform to enhance food market transparency and policy response for food security. It was launched by 2011 by the G20's ministers of agriculture following the global food price hikes in 2007-8। जैसा कि आप जानते हैं 2007-8 में जो ग्लोबल फूड प्राइस था वो लगातार बहुत बढ़ता जा रहा था, और इसको ध्यान में रखते हुए G20 के मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर ने 2011 में अमीस को लॉन्च किया। और आपको ध्यान रखना होगा कि ब्रिंगिंग टुगेदर द प्रिंसिपल ट्रेडिंग कंट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी, अमीस assesses the global food supplies focusing on wheat, maize, rice, soybean, provides a platform to coordinate policy action in the times of market uncertainty। जब बाजार में हालात जो है ना अनिश्चितताओं से भर जाता है, खाद्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगती है, उसमें हलचल मचने लगती है, तो अमीस का योगदान बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है डिफेंस एंड सिक्योरिटी से। इंडिया participated in the first edition of IMT Trilet, which is the joint maritime exercise in India participated in the first edition of IMT Trilet, which is the joint maritime exercise among the navies of IMT Trilet। चलिए, इंडिया, मालदीव, थाईलैंड। 1-3 इंडिया, तंजानिया 1-3-4 और मोजाम्बिक। फर्स्ट एडिशन इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज IMT, a joint maritime exercise among the India, Mozambique and Tanzania navies, was held at Dar es Salaam, Tanzania। Indian Navy was represented by the guided missile frigate INS Takas, INS Chetak helicopter and Marcos special force। एक ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैप से है। द रीजन बॉर्डरिंग या बॉर्डिंग गिलगिट बलिस्तान आर, गिलगिट जो बलिस्तीन या गिलगिट बलिस्तीन बलिस्तान कहाँ पर पड़ता है यार? ये सब बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है गिलगिट बलिस्तान? झिंगजियांग ऑटोनोमस रीजन, झिंगजियांग अफगानिस्तान, यूटी जम्मू एंड कश्मीर, यूटी लद्दाख, सभी। ये जो गिलगिट बलिस्तान है
वो भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अक्साई चाइना, जो जिंगजियान प्रांत है उससे शेयर करता है, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर से। अफ्रीकन ग्रेट लेक्स आर द सीरीज ऑफ लेक्स constituting the part of Rift Valley lakes in around the Eastern African Rift। इसमें कौन कौन शामिल है अफ्रीकन ग्रेट लेक्स में? 5 नदियां कौन कौन है ये? लेक विक्टोरिया, लेक पलावी, लेक तंगानिका, नॉट बड़ा बैकाल, सब बैकाल तो रूस में है, तो तीन तो आप छाट ही दीजिए। African Great Lakes are a series of lakes constituting a part of Rift Valley lakes in around the East African Rift। इसमें विक्टोरिया आती है। विक्टोरिया सबसे ज़्यादा, विक्टोरिया है सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड एरिया वाइज के दृष्टिकोण से। लेक विक्टोरिया दूसरा सबसे बड़ा है फ्रेश वाटर को में। लेक तंजानिका, विक्टोरिया लेक तंगानिका, द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक by volume and depth, and Lake Malawi. Lake Baikal is a Rift Valley lake in Russia. Consider the following statement. State of Malacca is between Malaya Peninsula and Socotra Island. Socotra Island. ये सोकोत्रा आइलैंड, सोकोत्रा आइलैंड। मलक्का क्या मलाया पेनिनसुला और स्कोट्रा आइलैंड के बीच में है? सोकोट्रा आइलैंड के बीच में है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज connects Persian Gulf and Gulf of Oman. Which of the above correct? The Strait of Hormuz in Persian Gulf. The Strait of Hormuz connects Persian Gulf and Gulf of Oman. Yes, इनकरेक्ट पूछा है, ये इनकरेक्ट है खाली। स्टेट ऑफ मलक्का या फिर स्टेट ऑफ मलक्का इज अ नैरो स्ट्रेच वाटर। एक तो मलाया पेनिनसुला और इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ सुमात्रा के बीच में है, ठीक है। ये एक तरह से मगरमच्छ है। स्टेट ऑफ मलक्का जो है वो एक मलक्का एक नैरो स्ट्रेच वाटर है बिटवीन मलाया पेनिनसुला एंड द इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ सुमात्रा, ठीक है, इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ सुमात्रा। As the main shipping channel between the Indian Ocean and the Pacific Ocean, it is one of the most important shipping lanes in the world. State of Hormuz is a state between Persian Gulf and Gulf of Oman. Gulf of Oman और Persian Gulf के बीच में State of Hormuz है, ठीक है, State of Hormuz। अगला है कि Kherson region recently in news is located where? Kherson region is in Ukraine. Kherson is in Ukraine. Kherson is a port city of Ukraine that serves as the administrative center of Kherson Oblast, located on the Black Sea and the Dnieper River. Kherson is the home of the major shipbuilding industry in regional economic center. Arrange the flowing places from north to south: Gogra, Hot Spring, Depsang, Galwang Valley। 4 3 2 1 तो है ही नहीं, चलिए 3 4 2 1। ये देखिए काराकोरम पास, एक गलवान वैली है, एक हॉट स्प्रिंग है, दौलत बाग, जिंजियांग, गोगरा, से गोगरा। हॉट स्प्रिंग से नीचे पड़ता है, गलवान वैली सबसे ऊपर है, उसके बाद हॉट स्प्रिंग, उसके बाद गोगरा, उसके बाद है साउथ बैंक, फिंगर फोर। Consider the following statement regarding Car Nicobar is the southernmost of the Andaman and Nicobar Island. Car Nicobar is the southernmost of the Andaman and Nicobar Island. Car, the Andaman Island lie
in the north of the 10-degree channel and Nicobar Island to the south. Great Nicobar is the home of Sompen and Nicobarese ट्राइबल पीपल। इन्वेस्टमेंट सही बताइए, चलिए दो और तीन सही है। ग्रेट निकोबार जो कि सदर्न मोस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, 910 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है ग्रेट निकोबार, जो कि सदर्न मोस्ट पार्ट है अंडमान और निकोबार आइलैंड का। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक क्लस्टर ऑफ अबाउट 836 आइलैंडों का क्लस्टर है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि ईस्टर्न बंगाल में पड़ता है, ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में। The two groups of which are separated by 150 किलोमीटर वाइड 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल 150 किलोमीटर का 10 डिग्री चैनल है इसके बीच में। द अंडमान आइलैंड जो कि नॉर्थ में है एंड द निकोबार आइलैंड जो कि 10 डिग्री साउथ के साउथ में है। ग्रेट निकोबार इज द टू नेशनल पार्क। ग्रेट निकोबार में दो नेशनल पार्क है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है एंड सैम्पोन एंड निकोबार रीज ट्राइबल पीपल यहीं रहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, रोस आइलैंड, लिटिल अंडमान नीचे पड़ता है, मिडिल अंडमान, अंडमान। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, स्वराज द्वीप उससे ऊपर है, शहीद द्वीप ठीक उसके नीचे है, स्वराज के बाद शहीद, और शहीद के बाद जो है वो नेताजी है। ग्रेट निकोबार, कार निकोबार। Consider the following statement regarding the Great Nicobar Island. Indira Point on the southern tip of the Great Nicobar Island is India's southernmost point. इंदिरा पॉइंट क्या है, वो सदर्न टिप ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड में पड़ता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड हैज a tropical wet evergreen forest, mountain range and coastal plains. Leatherback sea turtle is the island's flagship species. सब सही है। इंदिरा पॉइंट ऑन द सदर्न टिप ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड, इंदिरा पॉइंट जो है ना वो ग्रेट निकोबार आइलैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि इंडिया का भी सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। लेस देन 150 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशियन आर्किपेलागो। तो इंडोनेशिया से 150 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। The Great Nicobar Island has a tropical wet evergreen forest. It's a tropical wet evergreen forest. Mountain ranges reaching almost 650 meter above the sea level. 650 मीटर ऊपर है sea level से। Coastal plains, 14 species of mammals, 71 species का bird, reptile, amphibians, fish, some of the which are endangered. Leatherback sea turtle यहाँ का फ्लैगशिप स्पीसीज है। फाइनली एक मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गुज्जर्स एंड बकरवाल, जो कि नोमैडिक कल्चर है, गुज्जर एंड बकरवाल, ये आपको पता होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर में 4 सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर नोमैडिक कम्युनिटी, जिसको हम लोग गुज्जर और बकरवाल बोलते हैं, हैव अंडरटेकन arduous journeys on foot is the part of their seasonal migration to find better pastures and their livestock. अगर इस कार में बैठना है तो बस पहले अपने टेबल पे बैठ के रात बिताइए, दिन बिताइए, पढ़िए, आगे बढ़िए, तब इस प्रकार के कार की शोभा आप बढ़ा पाएंगे। थैंक यू।